So in the previous class, we learned start of one chapter that is inside the system unit, which are the things will be come in the CPU. All the things we have to be done one by one. We learned already about the components of the CPU. Just list it out the all the things: processor, main memory, secondary memory, CD/DVD drive, power supply, computer, fan, and ports, and the last motherboard. This thing we already learned, means only we can list out the components of the CPU. Now we are going to learn them one by one in the details. First is the processor, means the main thing of computer, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. Whenever you are typing something, whenever अभी आपने Zoom meeting open किया, this will be held with use of the processor only. So what is the processor? The CPU, another name of processor is also, you can say, the CPU. The CPU or processor is the small chip placed on the motherboard inside the system unit. Okay, so this is called the motherboard, जिसपे हमारे सारे parts कंप्यूटर CPU के सारे parts रहते हैं. This is called the motherboard. You can see the smallest chip inside it. This is called the processor. यहाँ पे जो आपको थोड़ा स्लैश दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक चिप रहती है छोटी सी, like a memory card. That is called the processor. Using of that, all things will be held. The processor is the small chip placed on the motherboard inside the system unit. It is also called as the brain of computer, as we told the CPU is the brain of computer. Same for the processor. Processor is also called the brain of computer. Remember the another name of the processor. Processor is also called the CPU. Processor is also called the brain of computer. The speed of the processor is measured in the gigahertz. Why we have to measure the speed of the processor? Because whenever you run your computer, कभी कभार आप अपने कंप्यूटर को रन करते हो तो कुछ समय पे, कुछ टाइम पे ऐसा होता है ये कंप्यूटर is starting hanging. आपका कंप्यूटर जो होता है वो हैंग हो जाता है. यस मैम, हमें बुक में कौन सा पेज नंबर निकालना है? नहीं निकालना, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, समझना है. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आप ध्यान नहीं रखते हो तो इसकी वजह से आप इसमें इंटरप्ट भी करते हो. What means motherboard? अभी मैंने दिखाया किरण, दिस इज कॉल्ड द मदरबोर्ड. ध्यान कहाँ पे था आपका? दिस इज द मदरबोर्ड, जहाँ पे सारे पार्ट्स रहते हैं, जहाँ पे सारे दो. दिस इज अ बोर्ड, सिंपल बोर्ड. जहाँ पे ये दिस इज द प्रोसेसर, यू कैन सी यहाँ पे प्रोसेसर आएगा. इट्स वन ऑफ द चिप मतलब जो अपने मेमोरी कार्ड देखा हो, छोटा सा आता है जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. इवन यूजिंग ऑफ दैट वी कैन आल्सो रन द कंप्यूटर, जिसका यूज करके हम कंप्यूटर को रन करते हैं. अच्छा, जब आप मोबाइल फोन का यूज करते हो तो कभी कभार क्या होता है कि whenever you are start running your mobile phone, sometimes it's hanging. कुछ समय पे ऐसा होता है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है because there are the lots of files and data stored in your mobile phone. Same thing will be happen in the computer also. अगर कुछ ज्यादा डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाए या फिर आपकी प्रोसेसर जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है. इफ यू स्टोर द लॉट्स ऑफ डेटा इन योर कंप्यूटर, द प्रोसेसर स्पीड विल बी लो. So whenever if you want to measure the speed of the processor, that is not for you, just telling to you. If you want to measure the speed of the processor, that will be measured in the gigahertz. अगर आप if you want to measure the length of any object, so you will be measured in the meter, centimeter, kilometer, right? So like that, if you want to measure the speed of the processor, that is measured in the gigahertz. जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम यूनिट्स आते थे, वैसे ही स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेजर करने के लिए यूनिट आता है गीगाहर्ट्ज. In the exam,
It will be asked in the MCQs also many times. बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है. So remember, whenever asked, the speed of processor is measured in blank. So you have to write to gigahertz. This is the image of the processor. Now you have to do one thing. The students who have a computer, जिस स्टूडेंट के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होगा, सिर्फ उसको ही ये टास्क परफॉर्म करना है. That is also given on your textbook, page number 3. वो आप मैम मेरी वॉइस कट नहीं होगी. मैम पेज नंबर पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 पे आपको एक टास्क दिया हुआ है, लर्निंग बाय डूइंग. So you have to be perform this task. Okay, I will not allow to unmute yourself again and again, because whenever you unmute yourself now, my voice will be cut at that time. Please try to listen to me clearly, otherwise I will be sharing this video on my YouTube channel. Okay, I am doing this task for only those students who don't have a computer. मैं ये वाला टास्क जो है मैं आपको वापस से यहाँ पे करके दिखाती हूँ. बाकी जो स्टूडेंट के पास कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप अगर अवेलेबल है उनके घर पे, तो वो ये चीज करेंगे. So first of all, what should you have to do? Click the start button and select the control panel. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली का यूज कर सकते हो. You can directly press the start button. अब start button पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी. मेरा Windows 10 है इसलिए ऐसी स्क्रीन आ रही है. अगर आपका Windows 7 होगा, Windows 8.1 होगा तो डिफरेंट स्क्रीन आएगी. यहाँ पे आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल. You can see is that name CO मैंने लिखा तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल पैनल. आपको उसके ऊपर क्लिक करना है. मैम Whenever you click it, yes, yes. मैम मेरे पास विंडो 10 है. जिसके पास जो भी सिस्टम होगी, सबकी सिस्टम अलग अलग होती है, बस प्रोसेस सबकी सेम आएगी, सिर्फ सिस्टम सबका अलग होगा. मैम विंडो 7 चलेगा? कोई भी चलेगा, whatever you have. Okay, as I told you, whatever which windows you have, you can use it. आपके पास जो भी windows होगा, आपको उसका यूज करना है. I'm not telling that you have to use only the Windows 10. मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया मेरा Windows 10 है तो उसकी स्क्रीन ऐसी आएगी. Windows 7 अगर आप यूज करें तो उसकी स्क्रीन अलग से आएगी. Windows 8 होगा तो अलग से स्क्रीन आएगी. So don't be asked the one question and again. Now click on the control panel. जैसे आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिस्टम आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा. यू हैव टू सर्च इट. सिस्टम पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप सिस्टम पे क्लिक करोगे तो सो यू कैन सी द डिटेल ऑफ द प्रोसेसर. दिस इज द प्रोसेसर. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोसेसर कि आपका कंप्यूटर क्या है, उसका वर्जन कौन सा है, उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है. दैट ऑल थिंग यू कैन सी. कौन से स्टार्ट मतलब कौन सी कंपनी का है, दैट यू कैन आल्सो सी व्हिच विंडो इज यूजिंग योर. एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसर होगी, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका कौन सी कंपनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा. राइट. So this is the task for the students who have a computer and PCs. Okay, now next. First, we learn about the processor. Second is the main memory. For example, if you are in the last year, we are learn about the Scratch also. We are also learn about the OpenOffice Writer. What should we are doing in that? We can. Okay, first of all, I told that students who don't have a computer, for them I am display here the project. जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया. जिसके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, whatever they have, they can
to and at their home. This is a one of the homework. So what's the need to send a continuously message that ma'am I have a laptop, ma'am I have a not, ma'am I don't have a computer, like that? Just tell me. That is the meaning that you are not listening to my instructions clearly. Okay, first we learn about the processor. Second is the main memory. Whenever you create any file, any of the folder, any of the program, whenever you are using the Scratch, whenever you are using the OpenOffice Writer, what will be happen? You create a program and you save it. आपने पूरा प्रोग्राम बनाया, आपने उसको सेव हुआ, सेव किया, तो वो सेव कहाँ पे होता है? That will be saved on the particular space. वो particular कंप्यूटर में particular space पे सेव होता है. That is called the memory. First type of memory is the main memory and second is the secondary memory. So here today we learn about only the main memory. What is the main memory? It is area where program, data and instruction in use are stored. जब रेगुलरली यूज कर रहे हो या फिर आप डेटा बना रहे हो, कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, that will be stored in the main memory. Mainly divided into the two parts. First is the RAM called the random access memory. Remember the full form. RAM, random access memory. Second part, ROM, read-only memory. What is the main memory? It is an area, particular space where you can store your program, your data and the instructions. Even it will be divided into the two parts. First is the RAM called the random access memory. Remember the full form of all. बहुत सारे full forms आने वाले हैं, तो आपको सबके full form याद रखने पड़ेंगे. ROM, read only memory. So let's learn them one by one. First we are going to learn the RAM. What is the full form of RAM? Random access memory. So you can see the image of RAM here. ये जो मदरबोर्ड में होता है, इतनी छोटी सी लाइक का, जब हम वीडियो गेम खेलते थे तो उसमें भी इस तरह की चिप होती थी. that whenever we place in our video game, it will be show all the games. So like that, RAM is a one of the chip in that we can store the data. Yes. हाँ. मेरे पास वीडियो गेम है. मेरे पास वीडियो गेम है. Okay, you have a video game, that is a good thing, but we are discussing here about the computer. I'm just giving the examples to you. And students, what about the students who are not wearing the school uniform? Okay, so you can see here the image of RAM. That is inside of motherboard, that is inside of the CPU. तो आपने इसको नहीं देखा होगा. ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं वो CPU के अंदर रहती है. तो कभी कभार जब आप CPU कोई ओपन कर रहा हो तो आपको पता चले कि yes, this is a RAM, this is a ROM, this is the hard disk, everything you will demonstrate. हाँ? Ma'am, I can see this. Okay. So what is the RAM? It stores the data and program that are being executed or used by the CPU. Executed का मतलब क्या होता है? आउटपुट मिलना, आपको दिखना, मतलब सेव होना. It stores the data and the programs that are being executed or used by the CPU. जैसे कि अगर आप स्क्रैच का प्रोग्राम बना रहे हो, ओपन ऑफिस राइटर में प्रोग्राम बना रहे हो, चलो आज मैंने आपको टास्क दिया कि यू हैव टू बी राइट डाउन योर नेम इन द ओपन ऑफिस राइटर. आज मैंने टास्क दिया आपको आपका नाम लिखना ओपन ऑफिस राइटर में, और मैंने बोला कि आपको इसको सेव भी करना है. टुमारो आई गिव द सेम टास्क. वापिस से वही फाइल को ओपन करो, उसके नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिखो. कैन यू डू दैट? आप ऐसा कर सकते हो? Yes, ma'am. कर सकते हैं, क्यों नहीं? अगर आपने वो फाइल सेव की होगी आपके कंप्यूटर में, सो यू कैन डू इट इजीली, राइट? सो इट विल बी यूज्ड बाय द सीपीयू. हाँ,
मेरे पास कंप्यूटर है नहीं, 1 वीक के बाद लाने वाले हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लीज डोंट डिस्कस दैट थिंग्स हियर। मैम हाँ, मैम मीटिंग एंड कब होगी? क्यों आपको जाना है तो आप ज्वाइन भी किए हुए हैं। Okay, so RAM is also called known as volatile memory. RAM का दूसरा नाम क्या है? Volatile memory. Because whenever your computer is off, जब आपका कंप्यूटर, जैसे कभी कभार क्या होता है, electricity will be gone. So whenever this type of thing happen, your memory will be erased. जब आपकी electricity डायरेक्टली ऑफ हो जाएगी, जो डेटा आपने सेव नहीं किया होगा वो इरेज हो जाएगा, that will be not available for you. That's why it is called the volatile memory. What is the RAM? RAM is the random access memory, store the data in the program that executed by the CPU. RAM is also called the volatile memory because whenever the electricity off, the data will be lost. जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी अब आपका डेटा लॉस हो जाएगा। नाउ सेकंड टाइप ROM, रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता था, आप टाइपिंग कर सकते हो, आप अपनी कुछ की फाइल बना सकते हो, लेकिन रोम में क्या होगा, दैट इज ओनली अ रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो। हाँ, हमारा डेटा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। क्या क्या कैसे चलता है? हमारा डेटा इलेक्ट्रिसिटी, वो तो हमारा पावर आता है ना, वो तो हम नहीं चलाते, दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू द गवर्नमेंट टू अस। लाइट नहीं जाती है हमारी, लाइट तो हम नहीं लाते। हाँ, अगर हम स्विच ऑफ करते तो लाइट बंद हो जाती है। whenever we turn on the power supply, then it will be show the electricity, we can use the electricity at that time. So this is the image of the ROM, and ROM is only for the read. उसको सिर्फ हम देख पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, we can only read it, but we cannot be change it. So it is used to hold the instruction that are executed when computer is initially switched on. जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, तो जैसे कि मेरे पास है लेनोवो का पीसी है, तो वो ऐसे मैसेज दिखाएगा लेनोवो। Otherwise, whenever you start your computer, it will be show the company name. Otherwise, it will be show the Windows option, Windows 7. Otherwise, Windows XP. इस तरह से मैसेज आपको पास करेगा, फिर ही वो स्टार्ट होगा। मतलब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ये तब की बात है, whenever you start your computer, it will be pass a one message to you, like a Windows 7, like a company name, Lenovo, or the other company, HP company, Dell company, it will be show that message only. आप उसको सिर्फ देख सकते हो, you can only see that, you cannot be changed. This instruction are used to start the computer. It is also called the non-volatile memory because of the non-volatile why? Because when the electricity will be lost, the instruction will be not changed. जितनी बार भी लाइट जाएगी, आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो वो वैसे ही दिखेगा. It will be not changed. Okay, so these are the rules. First, we are learn about the two types in the main memory. Main memory have a two types, RAM and the ROM. What is the RAM? It's a random access memory. It is stored the data. We can change it. We can write on it. It is also called the volatile memory. What is the ROM? ROM is the read-only memory which can be read by the user. User means us. Even whenever your computer is started, it will be show a one message. अगर नहीं हो रहा तो आप अपने कंप्यूटर में जिसके पास है मैं उसकी ही बात कर रही हूँ. So nobody can be message me what should we have to do who have not a computer. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसमें एक मैसेज पास होता है that you can be not changed. So that's why that is a ROM, read only memory. So वो जो सारा डेटा होता है वो सारा RAM में स्टोर होता है. Remember the images also. Okay, so now next, main memory have a two type, RAM and ROM have a
4 types. ROM have again a 4 types. First is the PROM, that is a programmable read-only memory. What was that? That is a programmable read-only memory. सबके full forms आपको याद रखने पड़ेंगे. Programmable read-only memory, in which program can be stored initially only once, after which it cannot be erased. जो initially हम देखते हैं Windows का option या फिर कंपनी का name, that is a PROM, that is a programmable read-only memory. Second is EPROM. Second is EPROM, that is a erasable programmable read-only memory. EPROM means erasable programmable read-only memory. And third type is EEPROM, that is a electrically programmable read-only memory. EPROM and EEPROM can be erased and reprogrammed multiple times. ROM में क्या होता था? You cannot be changed. But in the types of the ROM, in the EPROM and EEPROM, you can erase the data and change the data. EPROM require the alter. ये सब CPU के फॉर्म है. ये ROM के types है. Types of ROM. Read the heading. Okay. One more thing you have to remember, EPROM and EEPROM can be erase the data, right? So EPROM is use the ultraviolet rays to erase the data, and EEPROM is used directly by the electrical signal. इसलिए उसका नाम है electrically programmable. EEPROM जो होगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करेगा डेटा को इरेज करने के लिए, while EPROM is use the ultraviolet rays to erase a data. Remember this thing. Don't be forgot this thing. Types of ROM: PROM, EPROM, EEPROM. Okay. Now, if you have a query, so you can tell me about this topics that you learned today. One more thing we have forgot about the rain. Rain data will be measured in the megabytes or the gigabytes. Remember, rain data can be stored in the rain. The data can be stored in the rain is measured in the megabytes or the gigabytes. जैसे कि MB होता है, GB होता है, like that. Whenever you take a photo, it will be stored in the MB. Whenever you have a video, large amount of video, that will be stored in the GB. Megabyte, gigabyte. You have to remember this name about the rain. Okay, now do you have a query according to the ROM and ROM? No, ma'am. No, ma'am. No.